क्या आपने बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, आपने एक बहुत अच्छा अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा रिज़्यूमे बनाया और उसके बावजूद भी आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं? यदि ऐसा हो रहा है तो हमें उसकी वजह जाननी पड़ेगी, इसके तह तक जाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि जब भी एक रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर आपका रिज़्यूमे पहली बारी पढ़ता है, तो वो उसको पढ़ता नहीं है बल्कि स्कैन करता है और ये स्कैन जो है, वो 5 से 6 सेकंड तक ही होता है। उस 5 से 6 सेकंड में यदि आपके रिज़्यूमे ने उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन बना दिया, तो वो उस रिज़्यूमे को एक साइड पे रख देता है, सेलेक्ट कर लेता है, अदरवाइज़ वो उसको डस्टबिन में फेंक देता है। That means that your resume needs to wow the reader immediately. And the best way to ensure that it happens is by ensuring कि आपका जो रिज्यूमे है वो उन सभी जरूरी क्वेश्चंस का आंसर उस रिक्रूटर को उस स्कैन में ही दे दे। तो आइए आप इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन से टॉप 5 क्वेश्चंस हैं जो कि हर रिज्यूमे को आंसर करने चाहिए। टॉप 5 क्वेश्चंस व्हिच एवरी रिज्यूमे शुड आंसर। तो हेलो एवरीवन, आई एम मनीष कोचर और आज हम बात करेंगे उन टॉप 5 क्वेश्चंस की व्हिच एवरी रिज्यूमे शुड आंसर। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि डू यू पे अटेंशन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन your resume should answer is whether or not you pay attention to details। आप डिटेल्स को अटेंशन देते हैं या नहीं। और स्पेशली अगर आप ये क्लेम करते हैं कि यू आर डिटेल ओरिएंटेड, तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई जॉब डिस्क्रिप्शंस में भी आपने पढ़ा होगा, शायद उसमें लिखा होता है कैंडिडेट नीड्स टू बी डिटेल ओरिएंटेड, शुड बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। The For this, you have to make sure that you proofread your resume over and over again. Check it for spelling mistakes, for grammatical errors, for other kind of typos. Nothing says detail oriented more than an edited and mistake free resume. So, next time, before you hit the submit button, must proofread your resume repeatedly, once, twice, and once you are sure that there are no mistakes, only then you hit the submit button. The next question, which is there, is are you qualified? Now, recruiters initially scan your resume to see whether it answers the basics। क्या आपका रिज्यूमे बेसिक्स को आंसर करता है या नहीं। लाइक, आर यू क्वालिफाइड फॉर द पोजीशन। क्या आप उस पोजीशन के लिए जिसमें आपने अप्लाई किया है उसके लिए क्वालिफाइड हैं कि नहीं। मेक श्योर कि आपका रिज्यूमे इसके आंसर में बड़े बोल्ड लेटर्स में यस प्रेजेंट करें। सो फॉर दैट यू हैव टू टेलर योर रिज्यूमे टू द जॉब एंड द कंपनी। रीरीड द जॉब डिस्क्रिप्शन, उसको दोबारा से पढ़िए, इंक्लूड द इंफॉर्मेशन यू नो द रिक्रूटर विल लुक फॉर। हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आप बड़े आराम से पता लगा सकते हैं कि व्हाट इज इट द रिक्रूटर इज लुकिंग फॉर। Do you hold those degrees? Do you hold those certification? Does your employment record fulfill the level and years of experience desired for this position? Make this information easy to spot। और यदि कहीं पे आपको लग रहा है कमी है, तो आप उसको काउंटर करने के लिए जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। For example, you may not be having the certification, but you may be having the on the job, the practical experience of that particular skill। तो उसको इस तरीके से लिखना है ताकि आपका रिज्यूमे देखते ही वो हाईलाइट हो रहा हो। What is the next question? The next question is what have you accomplished? Now, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख देते हैं। अब रिक्रूटर क्या देख रहा है बिसाइड इसके ये देखने के कि आपके पास वो क्वालिफिकेशंस हैं कि नहीं। रिक्रूटर जो है वो ये भी जानने की कोशिश कर रहा है कि how and what you will contribute to that particular job role and the company।
सो इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग, सिर्फ अपनी टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिस्ट करने की बजाय यू मस्ट ऑफर सॉलिड क्वांटिफाइबल एविडेंस ऑफ व्हाट यू हैव अचीव्ड। एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल करिए, बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करिए, क्वांटिफाइबल मेट्रिक्स यूज करिए, स्टार मेथड यूज करिए। इन सब के बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है। तो एंड एक्सप्लेन नॉट जस्ट व्हाट यू डिड बट व्हाट इट meant for that one company in which you worked. सो अपनी अकम्पलिशमेंट को स्टार मेथड यूज करके क्वांटिफाइबल मैनर में एक्शन वर्ब्स और बुलेट पॉइंट यूज करके अच्छे तरीके से अपने रिज्यूमे में उतारिए। What the next question which comes is, before we come to the next question, I must also tell you that the growth tribe is aiming to get you the life you deserve. Or one of the tools which is there with growth tribe for all those who are confused about किस तरह का career उनको choose करना चाहिए if you're transitioning from one career to another career. For example, if you're in a government job or if you're an armed forces officer or you're paramilitary officer or personnel, और आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आना चाहते हैं, या इफ यू आर अ फ्रेशर एंड यू आर कंफ्यूज कि मेरे को किस तरीके की जॉब में जाना चाहिए, तो उसके लिए for you can use the psychometric assessment tool, psychometric career assessment, and it is available for right from school children to college going students to freshers to senior professionals. And it's a very proven scientific method which uses various kinds of uh, data inputs which you provide it, based on the questionnaire and your answers, and वो आपके career clusters को suggest करता है, and then also gives you what are the top choices in that cluster where you're likely to do well. So do consider is if you want to avail, if you want to undertake psychometric career assessment, उसका link जो है it will be provided in the below this video. So the next question is, does your career make sense? अब इस क्वेश्चन का मतलब हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग जो हैं वो एक ही सेम करियर पाथ पे सालों साल चलते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ देयर वर्क लाइफ दे स्टे ऑन द सेम करियर पाथ, steadily moving up the same ladder and taking on additional responsibilities. Uh, uh, for if you're in armed forces or if you're in government service, आप पहले मैनेजर थे, फिर उसके बाद डीजीएम हुए, फिर जीएम हुए, फिर डायरेक्टर हो गए। तो इस तरीके से एक ही करियर पाथ पे आप you keep climbing the ladder and keep assuming and keep shouldering additional responsibilities. तो your resume should show that career progression that is logical, and it should demonstrate how you have grown in your career. Similarly, for other people also who are not in government service but in corporate sector also, it should show that you have been climbing the ladder gradually and in a very logical manner. Did you move up in terms of title, coordinator, specialist, team leader, team lead, director, etc.? Take on additional responsibilities. It should demonstrate all these things. Only then your career makes sense. A job hopper or a career changer may not have the same logical career progression, and that is what the recruiter is looking for. Whether you have stability, whether you stay in a job, whether you, or are you a job hopper, are you going to contribute, to the company or not, or will you hop for another job in next 2 years only? That is what he is looking for, and whether you have been working hard, you've been upgrading yourself and climbing the ladder or in your career or not. The next question is whether you are a culture fit. Ultimately जो है, हर एक रिक्रूटर जो है वो ये चाहता है कि ये जानना चाहता है कि कैंडिडेट हु आर most likely to be successful in a specific position in the company.
So use your resume to explain how you are a great culture fit for the company. So उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कीवर्ड्स फ्रॉम द जॉब लिस्टिंग, जो भी जॉब लिस्टिंग है उसके उसमें से कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। आपको अ, 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 incorporate keywords from the job posting to show that you speak the same language uh, as the company. Use industry appropriate language to demonstrate that you are up to date and in touch with your field. And look for ways to incorporate your independent research about the company, about the employer. For instance, if a company's website emphasizes customer service, highlight distinct accomplishments in this particular area. So when your recruiter gets the feeling that you might be the one, 6 seconds can easily turn into 6 minutes. And when your resume answers their most pressing questions upfront, you have made it that much easier for them to schedule you for an interview. So इस तरीके से आपका इंटरव्यू आएगा, वो 6 सेकंड 6 मिनट में कन्वर्ट होंगे और वो 6 मिनट जो है it will they will get you an interview. Hope you like the video, and I strongly recommend that you analyze your particular resume, your resume, on these lines and see whether it answers the question the recruiter is looking for or not. Thank you so much for watching the video. Please like, subscribe, and share it. Thank you.